Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination. So as part of which we'll be doing 15 MCQs a day. एक दिन में मतलब एक सेशन में हम लोग 15 MCQs क्लोज टू 15 MCQs करेंगे फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स. करेंटली हम लोग फोकस कर रहे हैं लेबर लॉस पे एंड आज इस सेशन में हम लोग करने वाले द फैक्ट्रीज एक्ट. नाउ व्हेन इट कम्स टू exam, this UPSC EPFO, these topics would be important both for your APFC exam and also for your EO or AO examination. So these topics are not that कि एक ही exam के लिए use होंगे, दोनों के लिए होंगे. Moreover, 15 questions, close to approximately 15 questions इन topic से आते हैं, okay, जो अभी हम लोग कर रहे हैं. And स्कोरिंग पोटेंशियल भी है इनका एंड वेटेज भी अच्छा है. सो दोज हु वांट टू स्कोर गुड मार्क्स in this exam, in the upcoming UPSC EPFO 2025 exam, be it APFC or EO or AO, they should be watching these sessions regularly so that आपका जो प्रैक्टिस है इन टॉपिक्स का वो सही तरह से हो जाए. So here comes the first question under the Factories Act. So the first question is the history of factory workers in India during the British colonial period was characterized by one of these following. Now why this act, why they have planned to come up with such an act? See, what happened was India was an agrarian country. So agrarian के साथ साथ जब उसको एक बिजनेस एक कमर्शियलाइजेशन करना चाहते थे, they first focused on the textile industry, jute industry, etc. Okay, this is not for our benefit, but for the benefit of them, the Britishers themselves, for commercialization. thereby एक बिजनेस भी हो जाएगा और अच्छी क्वालिटी का जो भी प्रोडक्ट्स है रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स, जूट प्रोडक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स एक्सेट्रा, हैंडलूम्स एक्सेट्रा, वो सब सही तरह से उनको मिले. आफ्टर दैट दे फेल्ट दैट कुछ तो वर्कर्स का जो कंडीशन है या फिर एक मैनेजमेंट, ओके, किस तरह से उनको मैनेज करना है, उन सब के लिए एक लॉ ले आने की ज़रूरत समझे थे. तब जाके ये एक्ट आया था. पहले एक आया था, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस अगेन दैट गॉट चेंज. वो अभी हम आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. सो हियर इन दिस केस व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इन इंडिया, देयर कंडीशन, harsh working conditions, low wages and inadequate safety measures with child labor and exploitation of the workers were very much prevalent in the factories during the British colonial period of India. So here comes the next question. Which of the following is true regarding the factory acts introduced during British rule in India? As I have earlier said, जैसे हमने पहले कहा था कि जैसे जैसे फैक्ट्रीज कमर्शियलाइजेशन शुरू हुआ, नए नए फैक्ट्रीज लगने शुरू हुए, वर्कर्स काम करना शुरू किया, स्लोली वर्कर्स को भी अपना समझ में आया था कि ओके व्हेन समथिंग इज रॉन्ग और कंडीशंस, वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, so they have to resist. So वो resist करने लगे and there were demands also for better working conditions, better pay and all that. So for which British government ने क्या किया था, 1881 में एक बार एक्ट लॉन्च किया था, मतलब फैक्ट्री एक्ट, उसको थोड़ा अमेंड करके 1891 में. मेजरली द मेन एम बिहाइंड दिस वाज टू रेगुलेट द वर्किंग आवर्स, चाइल्ड लेबर, सेफ्टी मेजर्स, वो सब इंश्योर करने के लिए. दो ये एक अर्ली लेजिस्लेटिव एफर्ट्स उन्होंने कोशिश किया था, बट दे ऑफन लैक्ड इफेक्टिव एनफोर्समेंट सही से नहीं था. सो दो द एक्ट वाज इन प्लेस, उसका एनफोर्समेंट सही नहीं था. बट आफ्टर दैट, आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस, उसके बाद हमने उसको अपने हाथों में लेके उसको बहुत अच्छी तरीके से किया था, विच विल बी डिस्कसिंग इन द फर्दर क्वेश्चंस. सो हियर इन दिस केस द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 primarily aimed to regulate child labor. The Factory Act of 1891 introduced measures to improve workers' safety and working hours. इतना किया है, but not resolving everything, क्योंकि their effectively enforcement तो हुआ ही नहीं है. So this is wrong. So the other two, that is 1 and 2, are both true in this case. Here comes the next question. The formation of the Bombay Mill Hands Association in 1890 marked a significant milestone in the labor movement in India because देखिए जैसे जैसे हार्श कंडीशंस होते रहे एंड
चाइल्ड लेबर की दिक्कत हो रही थी, कम वेजेस, बिकॉज ऑफ विच नाउ द वर्कर्स स्टार्टेड रेजिस्टिंग, एज पार्ट ऑफ विच उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था, एंड द फर्स्ट ऑफ सच एसोसिएशन, यू कैन से फॉर्मल एसोसिएशन, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, ये फॉर्म हुआ था 1890 में. मेजरली दिस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ मार्क, okay, for the beginning of organized labor movements in India, and this has led actually to various acts that can be that are established actually for the betterment or the welfare of the workers in various factories that were running in India. Coming to the next question. See, if you look at the Constitution of India, it does not have any detailed provisions, especially for related to the factories. But what they have done is, कई सारे articles ऐसे उन्होंने create किए जो indirectly labor rights, industrial regulation, workers welfare, all उन्होंने सब कुछ उन्होंने decide किया था. So here the next question is based on that only. The Constitution of India enshrines various provisions that aim to protect and promote the welfare of workers, including those employed in factories. Now, which of the following articles is or are directly related or relevant to the prohibition of exploitative labor practices in factories? So इसमें जैसे आपने देखा है यहाँ पे आर्टिकल 23 है. Now article 23 prohibits of traffic in human beings and along with that forced labor also. Okay, so obviously prohibition of exploitative labor practices है. So this is true. Next आता है article 24, in this case prohibition of employment of children in factories. Okay, जो 14 years and under है तो उनको वो employ नहीं कर सकते, strictly child labor abolition type. So here article 24 ये भी true है because that again prohibits the exploitative labor practice, which is good. Next आता है हमारा, यहाँ पे जो मैं लिस्ट है उसमें से बता रही हूँ, article 39. Now here this principle directs the state to ensure that the health and strength of workers, men and women are not abused. उनको बहुत ही inhumane conditions में काम नहीं करवा सकते कोई भी factory. So that they have said as part of article 31. So yes, this also prohibits the exploitative practices in labor. Okay, next आता है article 42. This principle focuses on securing just and humane conditions of work and maternity relief. So especially this focuses on women labor of India. So yes, this also prohibits the exploitative labor practices in India. So this is also true in this case. Now article 43, it says that this principle actually directs the state to ensure a living wage, good working condition and social and cultural opportunities for the workers. So जो workers हैं उनको सब सारी चीज़ें मतलब अच्छे वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए, वेज इतना सही से होना चाहिए कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो बेसिक होना चाहिए वो कवर कर पाए, एंड ऑल्सो उनके कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ वो सब भी उनको देना चाहिए. सो अगेन इट प्रोहिबिट्स द एक्सप्लॉयटेटिव लेबर प्रैक्टिस. सो ऑब्वियसली दिस ऑल्सो कैन बी काउंटेड एज द आर्टिकल दैट इज रेलिवेंट टुवर्ड्स द प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव लेबर प्रैक्टिसेस इन फैक्ट्रीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Now coming to the next question. See, when it comes to here in this case I'll be giving you a statement and as part of the options you have to tell me which is correct. So यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं the Constitution of India through various provisions mandates the state to ensure the well-being of workers including those employed in factories by directing the state to secure their right to work, education and public assistance as well as promote their educational and economic interest and protect and improve their work environment. Okay, now which one of the following is correct regarding the statement? Now just now हमने कुछ articles देखे थे, along with that they have given few more articles here. Now 41, article 41 क्या बोलता है? It emphasizes the right to work. Okay, मतलब एजुकेशन राइट, उनका वर्क सही से होना चाहिए, उनका एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उनके ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, अगर कुछ हुआ है एज पार्ट ऑफ द वर्क
while working or something, the factory has to take responsibility, and this they have to ensure that this is done. ओके ये बोलता है 41 आर्टिकल. नो 42 क्या बोलता है? मेजरली दे हैव टू प्रोवाइड ह्यूमन कंडीशंस. ये अभी हमने इससे पहले देखा था, मैटरनिटी रिलीफ स्पेशली. Okay, so yes, that also is as part of this. So 43, now this says that उनका living wage, good working condition, social and cultural opportunities वो सब देना है उनको, ये भी है. And 46 कहता है कि promotion of educational and economic interest, especially if they belong to the SCs, STs or other weaker sections. weaker sections के लिए जब है तो definitely they have to be provided or they have to be supported with some to support their educational and economic interest as well. अब 48A क्या बोलता है? protection and improvement of the environment in which they are working. Okay, so obviously जो हमने यहाँ पे दिया है, मतलब mandates the state to ensure well-being of workers by directing the state to secure the right to work, education, public assistance, as well as promote their educational and economic interest and protect and improve their work environment. सभी भी ये A clause में, ये A option में relevant है. So this is the correct answer. यहाँ क्या बोला? The statement is partially correct as 48A is relevant for central. No. Okay, so this is false. The statement is incorrect as the constitution does not mandate, it mandates. So this is also false. The statement is incorrect as the constitution only recognizes the right to work and education but not public assistance or work environment protection. No, everything is there as part of the provisions that has been provided or regarded under the Constitution of India. So coming to the next question, again from the provisions provided under the Constitution of India. The Constitution of India recognizes the importance of worker participation in the management of industries. कई बार उनको they have to participate in the management of industry until and unless it is done, एक रैपो नहीं बनता है and स्मूथली उनके कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे कुछ डिस्कस करना है या फिर रिजॉल्व करना है तो वो नहीं होता. सो दे हैव टू इनवेरिएबली participate in the management of industries. So one of the following articles gives them that recognition or that provision. Okay, now you have to tell me which of these article or articles they provide such a specific provision for the participation of workers in management of industries. So in this case it is article 43A is the one that provides the workers a provision to participate in the management of industries. So here comes the next question. See, before क्वेश्चन में बोलूँ उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे. See, जैसे हमने देखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1881 में, उसके बाद 1891 में फैक्ट्रीज एक्ट लॉन्च किया था, लेकिन उसका इन्फोर्समेंट सही से नहीं हुआ था. आफ्टर दैट 1947 में जब हमारा जो इंडिपेंडेंस आया था, उसके बाद 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से जो 1891 में जो ऑलरेडी फैक्ट्रीज एक्ट था उसमें बहुत कुछ ऐड करके, मतलब उन्होंने तो सिर्फ वहाँ पे चाइल्ड लेबर, थोड़ा सा वर्किंग कंडीशंस उन सबका दिया था, उन सबका उसमें एज एन एक्ट लॉन्च किया था. बट इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें और भी बहुत सारे, जैसे मैटरनिटी वाला है, ह्यूमन कंडीशंस, उनको किस तरह से सपोर्ट करना, ऐसे कई सारी चीज़ें उन्होंने उसमें डाला था उस एक्ट में. एंड एज पार्ट ऑफ विच द फैक्ट्रीज एक्ट came into force in 1948. Okay, now what are the question? Now this question says, consider the following statements regarding the objectives of the Factories Act 1948 and which of the statements given below is or are correct. Now when we talk about the objectives, the first thing is the first aim of this act was to ensure the safety of workers. किस तरह से बाय रेगुलेटिंग द यूज ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, किस तरह के प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं, सेफ्टी प्रोसेसेस, वर्क प्रोसेसेस, वो सारे इसमें मेंशन्ड है. नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल वेलफेयर फैसिलिटीज, जैसे सही से ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, सैनिटरी फैसिलिटीज होना चाहिए, फर्स्ट एड वाला फैसिलिटी होना चाहिए. बड़े फैक्ट्रीज में तो दे हैव टू ऑलवेज कीप एन एम्बुलेंस ऑल्सो रेडी. उस तरह से हर चीज़, सो दैट वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर सके. This aims to set standards for working conditions, मतलब कितने आवर्स, घंटों का काम होना चाहिए, एडल्ट है तो कितना, यंग पीपल है तो कितना, एंड ऑल दैट. एंड वुमेन अगर है उनके लिए किस तरह से
कंडीशंस होना चाहिए एक्सेट्रा, उनके टाइमिंग्स किस तरह से होना चाहिए. एंड दिस एक्ट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, ये भी है, abolition of child labor. And this act mandates maintaining cleanliness and hygiene within the factories. बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्लिनलीनेस मेंटेन करना चाहिए, वो भी ये मैंडेट करता है. इट एम्पावर्स गवर्नमेंट अपॉइंटेड फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स सो दैट दे कैन मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लेंट्स विथ इट्स प्रोविजंस. किसके प्रोविजंस? द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के प्रोविजंस को किस तरह से वो कर रहे हैं, वो मैनेज करने के लिए इट एम्पावर्स गवर्नमेंट अपॉइंटेड फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स टू इंस्पेक्ट and monitor whenever and wherever required. This promotes the rights of workers by setting guidelines for working conditions, wages, leave provisions, working hours, और कितने दिनों में उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, and all that, everything is mentioned. And this also helps in maintaining industrial harmony and prevents disputes as well. ओके अगर सब सही है तो डिस्प्यूट्स को तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो वो एक है इसमें. एंड दिस एक्ट ऑल्सो अलाउज फॉर अमेंडमेंट्स एंड रूल्स टू बी मेड सो दैट जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रहे हैं इंडस्ट्रीज में, वेरियस इंडस्ट्रीज में, सेक्टर्स में, दैट कैन बी टेकन इन टू अकाउंट सो दैट एट द एंड ऑफ द डे द वर्कर सेफ्टी शुड बी देयर एंड वेल बीइंग शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन द फॉर द सेक ऑफ एनी न्यू डेवलपमेंट्स. सो वो भी इसमें है. Now coming to the question here, answer here, question तो मैंने पढ़ लिया था already. So this act seeks to ensure the health, safety and welfare of factory workers by regulating working conditions and providing essential facilities like clean drinking water and first aid. Yes, it is true. That prohibits the employment of children below the age of 14 years in factories so to safeguard their physical and mental well-being. That is also true. That empowers factory inspectors to resolve wage disputes between employers and workers. ये इसमें नहीं रहता है, ठीक है. So only 1 and 2 are correct here. So A is the correct answer in this case. Now coming to the next question. Under section 2 of the Factories Act 1948, the definitions provided which of the following statements is or are correct regarding the classification of individuals based on age. So जैसे मैंने बताया है, कौन किस एज का बंदा, क्या उसका टर्म है, ओके, and whether they can work in the factory or not, all that has been already mentioned in the definitions part, that is section 2 of the Factories Act 1948. So as per that, a child refers to an individual who had not completed 15th year of age and is prohibited from any form of employment, that is 14 years. 15th ईयर पे है लेकिन कंप्लीट नहीं किया है. ओके, सो यस, दिस इज टू चाइल्ड का डेफिनेशन यही है. उसके बाद आता है यंग पर्सन. अ यंग पर्सन इज अ पर्सन हु इज ईदर ए चाइल्ड और एन एडोलेसेंट. दैट इज, एडोलेसेंट कौन है? इज एन इंडिविजुअल हु हैज कंप्लीटेड 15th ईयर ऑफ एज बट नॉट कंप्लीटेड द 18th ईयर ऑफ एज. This is adolescent. And an adult is an individual who has completed the 18th year of age. So young person ईदर ये हो सकता है एडोलेसेंट या फिर एडल्ट हो सकता है. ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर ट्रू. सो दिस इज ऑल ऑफ द अबव. ये ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए. So coming to the next question, consider the following statements regarding the definition of factory under the Factories Act 1948. Now which of these statements given below is or are correct? So factory का definition क्या है? Now a factory is defined as any premises where a manufacturing process is carried out with the aid of power, okay, and employs 10 or more workers on any day in the last 12 months. And yes, this is the definition of factory. So this is true. Now the definition of a factory does not include premises like mines, railway running sheds and hotels, restaurants. Yes, they are not factories actually. So yes, they do not, the definition of factory does not include all this. So this is also true. Now, a manufacturing process conducted with or without power qualifies as a factory only if 15 or more workers are employed on any day in the last 12 months. This is not true. Why? A manufacturing process conducted with power, okay, will qualify as a factory only if 20 or more workers are employed on any day in the last 12 months. So definition में थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने गलत, मतलब
स्टेटमेंट गलत दिया है. So only 1 and 2 are correct. So in this case B is the correct answer. Moving on to our next question. During a public emergency, the state government can exempt factories or categories of them, sabhi nahi, only few categories, from certain provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 for a maximum period of how much time? See, कई बार ऐसा होता है कुछ पब्लिक इमरजेंसी आ गया तो इन दैट केस दे कैन एग्जेम्प्ट थ्रू एन ऑफिशियल gazette notification. They can be exempted from the provisions of this provident employees provident fund and miscellaneous provisions act. तो उनको उसके लिए provisions करने की ज़रूरत नहीं है, only for a certain period. Okay, that is 3 months at a time, renewable for another 3 months, not more than that. Moving on to our next question, ये section 6 में आता है under the Factories Act 1948. In the context of the approval, licensing and registration of factories under the Factories Act 1948, it rules that it rules related to the approval, licensing and registration may be made by the state government. Yes, this is true. State government ही करता है ये. Now, which of the following statements is correct regarding the deemed approval of the site for a factory? जिस place में वो किया है उसके लिए अगर एप्लीकेशन भेजा है, सो इन दैट केस अगर वो एप्लीकेशन भेजने के बाद इफ नो रेस्पॉन्स इज गिवन टू द एप्लीकेंट विद इन 3 months of sending the application, the requested permission will be considered granted. अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, मतलब एक क्वेश्चन भी नहीं उठाया और अप्रूवल भी नहीं दिया, इन दैट केस उनको 3 months कंप्लीट हो गए तो it will be deemed as permission granted for that particular factory to be established in that premises. Moving on to our next question, consider the following statements regarding section 7 of the Factories Act 1948. Now, which of the following statements that is given below statements is or are correct? कौन से statement सही है? So here as per section 7, see जब भी जहाँ पे जो कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश होता है या फिर एक प्रेमिसेस में फैक्ट्री वर्क कमेंस होता है, देन डेफिनेटली द ऑक्युपायर मस्ट बी नोटिफाइंग द चीफ इंस्पेक्टर इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड. अगर वो नया फैक्ट्री है या फिर वो एक्ट उनके फैक्ट्री में नया लागू हो रहा है. कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट्री बहुत छोटा है, जैसे हमने देखा है कि एटलीस्ट लास्ट 12 मंथ्स में उतने वर्कर्स होने चाहिए, 10+ वर्कर्स. अगर नहीं है तो अभी नया कुछ हुआ है तो डेफिनेटली now the act will be enacted in their factories, right? So they have to follow all the rules of that act. So उसके तहत they have to notify the chief inspector related information related to all this, like वो occupier का नाम क्या, name and address of the owner of the premises, what kind of manufacturing unit is that, किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, लास्ट 12 मंथ्स में किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ है, आगे 12 मंथ्स का इनका प्लान क्या है, एवरीथिंग दे हैव टू सेंड इट टू द चीफ इंस्पेक्टर. Okay, now as part of which few statements I have given here, now you have to tell me which of these statements is true or not. Now here the occupier must notify the chief inspector in writing at least 15 days before commencing the use of premises as a factory, detailing the nature of manufacturing process and the number of workers likely to be employed. Yes, this they have to do it. So this is true. Okay. For factories covered under the act for the first time, जैसे मैंने बोला है पहले नहीं था, but now they have थोड़ा बड़ा कर लिया है, employees ज़्यादा है and all that, तो definitely they have to get this done. So during that time the occupier must send the notice to the chief inspector within 30 days of the act's enactment. मतलब उनके यहाँ वो establish enact करना ज़रूरी है. जब वो position आएगा तो immediately within 30 days of the act enactment, that is this Factories Act 1948 enactment, definitely they have to send all the requisite details within 30 days, not 15 days. So this is false. When a new manager is appointed, the occupier must notify the chief inspector within 7 days of the manager assuming the charge. Yes, this also they have to do
बिकॉज मैनेजर का फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आफ्टर द एम्प्लॉयर, जो ओनर, और इन सिंपलर टर्म्स नेक्स्ट कम्स जो highest authority है who he's looking after the entire factory, wage payments, everything जो देखता है, that is the factory manager. So definitely उसमें कुछ भी changes हुआ है तो that has to be informed to the chief inspector as per the section 7 of the Factories Act 1948. Coming to the next question, consider the following statements regarding the general duties of the occupier जो फैक्ट्री चला रहा है under section 7A of the Factories Act 1948. Which of the statements given below is or are correct? See, the occupier must ensure a safe plant and work systems and provide adequate training and supervision to workers for their safety. क्योंकि जब तक वो सही से ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, they'll not be able to work on a particular machinery, right, with all care. So that needs to be done, and that is a responsibility of the occupier itself. And yes, that is true. The occupier is required to create and update a written health and safety policy detailing arrangements for its implementation. जो भी वो implement कर रहे हैं as per the size of the factory, that needs to be done. And yes, this is also true. The occupier is mandated to provide on-site medical facilities for all workers in the factory regardless of the factory size or nature of operations. As per the requirement, अगर कोई dangerous काम है, as per the work in the factory, the medical facilities should be provided to the workers as per the requirement in the factory. वहाँ के लिए ऐसा नहीं है कि personally भी उनको सब कुछ all the health facilities or medical facilities देना ही देना है. It's not like that. So this is for the statement उस तरह से जो सबके लिए हर तरीके से, that's not true. Though yes, it is a responsibility to provide them with all the relevant medical facilities or first aid facilities, that's true, but this is not the one. So here only 1 and 2 are true, so A is the correct answer here. So here comes the next question. Which of the following statements regarding the appointment and designation of inspectors under the Factory Act 1948 is or are correct? Now this falls under section 8, and here it says that it is a responsibility of the state government, or the state government has the authority, in simpler terms, to appoint qualified individuals as inspectors under the Factory Act. And इसके अलावा अगर district बड़ा है, नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स ज़्यादा है, तो एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर्स, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर्स, डिप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर्स, उनको भी अपॉइंट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट. अलॉन्ग विद दैट जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, एवरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल बी द इंस्पेक्टर फॉर हिज और हर डिस्ट्रिक्ट. And the state government can appoint public officers as additional inspectors within the designated area as per the requirement. So, and all these appointed officials will be considered as public servants under this section, that is section 8 of the Factories Act 1948. So here in this case, every district magistrate is an inspector for their district, and the state government can also appoint additional inspectors within the designated areas as per the requirement is the correct answer. So here comes the next question. Consider the following statements regarding the powers of inspectors under section 9. Section 8 में appointment है and section 9 में उनके powers के बारे में discuss करेंगे. Now which of the following statements is or are correct? See, एक बार appointment हो गया inspectors का. Now after that, that inspector can enter the places that are used as factories, either alone or accompanied by the experts etc. जहाँ पे भी need होगा. He can examine the premises, machinery, substances etc. He can investigate accidents or dangerous accidents and gather necessary statements from the workers and others in that area etc. He can also demand production of factory related documents by the occupier, that is the factory owner etc. And he can seize or copy the documents which are required under the offenses. अगर कुछ offense हुआ है तो under the act, that also is possible. He can take photos, measurements, recordings using appropriate tools wherever necessary so as to substantiate
his work, that is उनका जो भी inspection हो रहा है उसको substantiate करने के लिए, तो definitely he can do that. He can deal with the hazardous articles or substances including dismantling, testing, processing them for examination, that also he can do. So now with this information I think you'll be able to answer this question. An inspector has the authority to enter factory premises, examine machinery and investigate accidents within his jurisdiction. True. An inspector can seize factory related documents or hazardous substances for examination if necessary. True. An inspector is required to seek prior approval from chief inspector before dismantling or testing hazardous substances in a factory. This is not true. This is false, because he has that power to do that, because that falls under the section 9 section 9, where powers of the inspectors are already mentioned or highlighted in the Factories Act 1948. Coming to the next question, which of the following statements regarding the cleanliness regulations in factories under the Factories Act 1948 is or are correct? Now this particular section, that is section 11 of the Factories Act, says that the factory has to be maintained clean and कुछ भी dirt है या waste है daily basis पे उसको remove करना चाहिए from the staircases, passages, work areas, etc. Floors also must be cleaned thoroughly, and every week disinfectant भी यूज करना चाहिए wherever necessary. Okay, and wet areas अगर कुछ है तो उसके लिए drainage provisions भी होना चाहिए. Along with that, doors, windows and frameworks, they need painting for every 5 years. 5 years में either painting या varnishing compulsory है. एंड जहाँ पे भी ऐसे कंप्लेंट्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑपरेशंस वो स्टॉप नहीं कर सकते, उन केसेस में स्टेट गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट देम एंड प्रपोज सम ऑल्टरनेटिव क्लीनिंग मेथड्स. ओके, वो measures कर सकते हैं. So here in this case the state government can exempt factories from compliance with the cleanliness regulations of operations, making wherever impossible है वहाँ पे, and proper alternative cleaning methods are imposed. ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लीन नहीं होगा लेकिन कुछ alternative methods है. Doors, windows, frameworks in factories need painting and varnishing ज़रूरत है, but every 5 years, not 2 years. So moving on to our next question, consider the following statements regarding the workplace health and safety provisions under the Factories Act. ये सारे पढ़ते हैं section 13, 14, 15, 16 के अंडर. Now as part of which of the statements given below is or are correct? Now what does section 13 say? Section 13 बोलता है कि ventilation and temperature बिल्कुल सही से maintenance होना चाहिए, and the state government can set standards for ventilation and temperature requiring proper instruments and records, maintenance, etc. And if the chief inspector अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर्स कंट्रोल, हाई टेम्परेचर्स कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली विथ रिटन ऑर्डर्स ही और शी कैन ऑल्सो डू दैट. सेक्शन 12 में आता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट, वो सही मेथड्स के साथ उसको डिस्पोज करना चाहिए फैक्ट्रीज से. सेक्शन 14 बोलता है कि जो डस्ट एंड फ्यूम है उसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, मतलब वो अंदर ही accumulate ना हो, and that which can have negative impact on the health of the worker. So सही तरीके से ventilation अगर सही सब कुछ है तो जो fumes है, dust है, वो सब निकल जाएगा. Okay, so all that precautions and necessary measures are to be taken under this section. Section 15 ये बोलता है कि artificial humidification wherever required, that needs to be done with proper care, etc. Now with this information, let's see the options. The state government has authority to set standards for ventilation, temperature and artificial humidification in factories. This is true. Factories emitting harmful dust or fumes must install exhaust appliances near the source to prevent inhalation and accumulation. तो मैंने बताया कि पहले ही कि वो सही से carefully वो सब काम करना चाहिए so that will not impact the health of the workers. Yes, this is also true. The chief inspector can issue written orders mandating factories to use purified water for artificial humidification only after consulting the state government. ऐसा कुछ नहीं है. In fact, the state government itself can establish humidity standards, etc. So here only 1 and 2 are correct. So A is the correct answer here.
Moving on to our next question. Consider the following statements regarding the provisions for overcrowding and lighting under the Factories Act 1948. ये आता है section 16 and 17 में. Okay, 16 में overcrowding वाला है and section 17 will look into the lighting one. So here existing factories must ensure a minimum of 9.9 cubic meters of space per worker, excluding any space higher than 4.2 meters from the floor. Okay, ये एक mandate है and yes, this is true. Factories are required to maintain clean and unobstructed glazed windows or skylights used for lighting purpose. This is also true. The chief inspector has authority to exempt a workroom from overcrowding regulations if it does not pose a health hazard to workers. जो ये provisions इन्होंने दिया है minimum 9.9 cubic meters and all that, अगर वहाँ पे उतना problem नहीं है तो definitely the chief inspector has authority to exempt that particular organization from that. So yes, this is also true. So 1, 2, 3, all these are true here. And here एक और चीज़ है, 9.9 cubic meters ये है existing factories के लिए and 14.2 meter cube है for newer ones. Okay, ये ध्यान रखना पड़ेगा, otherwise this statement is very well true. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत अच्छे तरीके से हमने किया है सेशन 1. अब इसी का कंटिन्यूएशन हम लोग करेंगे अगले सेशन में. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि currently at EduTap they are offering 3 courses for those students who are preparing for the upcoming UPSC EPFO APFC and EO or AO examination. So for which they are offering 3 courses. उसमें सबसे पहला कोर्स है मास्टर कोर्स. ओके, ये उन बच्चों के लिए सही है जो बिल्कुल अभी स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन एंड दे वांट एवरीथिंग एट वन प्लेस, लाइक द कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लाइव सेशंस, कुछ डाउट क्लियरेंस के लिए, वो सब इसमें मिलेगा. एंड इवन एवरी वीक थर्सडे के दिन कुलदीप सर आपको खुद ऑनलाइन आपका क्लास लेंगे, देर वेर इन ही विल टेल यू हाउ टू यूटिलाइज द कंटेंट दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द कोर्स, अलॉन्ग विद दैट जो भी आपके डाउट्स है वो सब वो क्लैरिफाई करेंगे. दूसरा कोर्स है 2 टेस्ट सीरीज प्लस. ये उनके लिए है जो स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट्स का कंटेंट उनको चाहिए एक्सक्लूसिवली, वो प्लस उनका जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो सब उनको मिलेगा. मतलब जो ऑलरेडी कुछ कंटेंट उन्होंने पढ़ चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए उनको हेल्प चाहिए. नाउ थर्ड कोर्स है टेस्ट सीरीज. ये उनके लिए जो ऑलरेडी अच्छे से पढ़ लिया है, मतलब अपने खुद के सोर्सेस से, बट नाउ दे वांट टू टेस्ट देमसेल्व्स वेयर दे स्टैंड, फॉर विच दे नीड टू हैव लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टेस्टिंग देमसेल्व्स, टेस्ट दैट इज मॉक टेस्ट एक्सेट्रा. सो फॉर देम दिस टेस्ट सीरीज वुड बी ऑफ great help. And if you have any queries related to any of these courses, you can reach out to the team members, any of the team members from EduTap, and accordingly you can make an informed decision कि कौन सा कोर्स आपको लेना है. Thank you very much for being with me, and I hope you like this session. See you all very soon with the next session.